हेलो एवरीवन। सो आज के दिन मैं वीडियो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, आई एम ट्रैवलिंग एट दिस मोमेंट एंड विच इज़ वाई आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ माई सिस्टम एंड आई कुडंट रिकॉर्ड द वीडियो फ्रॉम माई सिस्टम itself. So I'll quickly take you through the trades, okay, which we have taken in our account today. Also something which was recommended to our members in our community. So there are two trades basically. One is Escorts Industry and another one is LTI Mindtree. एक हमारा टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ट्रेड है एंड दूसरा जो है वो हमारा क्वार्टरली रिजल्ट बेस्ड ट्रेड होगा. सो फर्स्ट इफ़ आई टेक यू थ्रू एस्कॉर्ट्स इंडस्ट्री, आई विल एक्सप्लेन यू कि हमें व्हाट एग्जैक्टली द रीजंस आर, क्या रीजंस, क्या फैक्टर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या स्ट्रैटेजीज हमने इम्प्लीमेंट करी है उस ट्रेड के पीछे. सो इफ आई टेक यू टू एस्कॉर्ट्स ट्रेड फर्स्ट. ओके, if you see at this levels, levels हमने पहले ही ड्रॉ करके रखे. there are a lot of charts, there are a lot of stocks like this जहाँ पे levels already drawn हो चुके हैं by me and by my my colleagues as well. So it gets very easy for us to analyze any stock at any particular of time. So we do not have to draw maintain the levels again and again. It's just that we need to keep a track on all the stocks, go through each stock every day, maybe 15, 25, 30 stocks like that, and we just wait for the levels to come at our zone. That's it. So today अगर हम देखें यहाँ पे escorts, I'll just draw the levels for you. Okay, so ये जो हमारा levels है, okay, यहाँ पे काफ़ी बार रिजेक्शन फेस कर चुका है एस्कॉर्ट्स इन द मिड मंथ ऑफ मे टिल मिड मंथ ऑफ जून. ओके, प्राइस वाज नॉट एबल टू गो टूवर्ड्स अपसाइड. सो यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी. आई वुड से नॉट द सेलर्स वर गेटिंग एग्रेसिव मोर देन बायर्स. इट वाज नथिंग लाइक दैट बिकॉज इफ आई सी द प्रीवियस ट्रेंड, ओके, इट वाज टोटली इनटू अप ट्रेंड. ओके, और यहाँ पे जो है ये हमारा प्योरली प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है बिकॉज इफ आई लुक एट द वॉल्यूम्स. So even if I look at these volumes, okay, see there are no higher volumes which will indicate कि sellers ज़्यादा aggressive हो रहे हैं buyers से इस वक्त. So it was purely a profit booking, nothing else. And finally after a month the price somehow breached the resistance level and it started its continuation momentum towards upside. So I'll just delete these two things. Okay, सो नाउ पहले जो हमारा रेजिस्टेंस था वो एक अभी सपोर्ट बन चुका है. ओके, वी वर एक्चुअली वेटिंग फॉर द प्राइस टू कम डाउन अगेन एट दिस पर्टिकुलर लेवल्स एंड देन वी विल जस्ट टेक आर लॉन्ग साइड पोजीशन. सो ये एक हमारा लेवल्स हो गया सपोर्ट. जो हमारा रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है. देन वी लुक एट द वॉल्यूम्स. सी इफ आई ड्रॉ द वॉल्यूम्स हियर. ओके, ये देखिए आज के दिन इतना ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है. That clearly shows कि there are a lot of DIs, maybe institution, maybe retail investors who were actually waiting for the price to come down at this level and then jump in to make their long position in the market. So this is what indicates, this is what shows you कि कहाँ ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, कहाँ बाइंग साइड ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है हमें, कहाँ ज़्यादा एग्रेसिव बायर्स है, कहाँ ज़्यादा एग्रेसिव सेलर्स हैं विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि हमें लॉन्ग पोजीशन लेना चाहिए या शॉर्ट पोजीशन. हाउ डू वी हैव टू मैनेज आवर ट्रेड्स एंड एवरीथिंग. So this is our second confirmation. Okay, green volume, huge volume with green candle and that too at support zone. So this is our second confirmation. And if I look at 50 EMM, ये जो हमारा लाइन जो है ये, if I draw it again, ये जो हमारा लाइन है if you can say this is actually an indicator. Okay, ये हमारा एक इंडिकेटर है. सो इट्स एन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए वेदर द स्टॉक इज़ इन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड. कोई भी स्टॉक अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो जब ये EMI के लाइन को टच करने आता है तो EMI जो है इट एक्ट एज अ डिफेंस. ओके, इट डिफेंस की तरह एक्ट करेगा और प्राइस जो है वो इसी को सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ फिर से कंटिन्यूएशन मोमेंटम में अपने चलता रहेगा. साइमल्टेनियसली अगर उसके नीचे ट्रेड कर रहा है EMI लाइन के तो EMI लाइन जो है वो उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा प्राइस के लिए. अब जैसे अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली EMI के ऊपर ही चल रहा था. जब ये EMI के पास आ रहा था इट वॉज टेकिंग अ सपोर्ट. अगेन अगर आज भी हम देखें तो EMI पे आया हुआ है एग्जैक्टली और वहीं से सपोर्ट लेके ही ऊपर गया हुआ है. तो ये हो गया हमारा तीसरा कंफर्मेशन. एंड नाउ आई ऑलवेज लुक फॉर द Fibonacci retracement as well. Whenever the price is in uptrend, I make sure that कि ये अगर रिट्रेस कर भी रहा है, अगर प्राइस करेक्शन हो भी रहा है एक पर्टिकुलर प्राइस में, तो आई हैव टू चेक कि एटलीस्ट 0.5 या 0.618 का जो लेवल्स हैं जिसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल्स माना जाता है. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके,
सो 0.5 0.618 जो लेवल्स है ये फिबोनाची के, बेसिकली ये रिट्रेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं, नथिंग एल्स। सो लेट्स अगर प्राइस कोई अप ट्रेंड में है तो प्राइस जो अगर नीचे आएगा प्राइस करेक्शन के लिए, तो फर्स्ट ये आपका 0.382 पे सपोर्ट ले लेगा, अगर उसको ब्रेक करेगा तो 0.5 पे सपोर्ट ले लेगा। 0.5 अगर ब्रेक कर लिया तो फाइनल जो है वो गोल्डन जोन माना जाता है, जो है 0.618, जो आपको दिखता होगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। अगर 0.618 को भी ब्रेक कर जाता है ये नीचे की तरफ, देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि प्राइस जो है वो अब रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा है, इट्स एक्चुअली बेरिश जोन नाउ। जो प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है वो रिट्रेसमेंट नहीं है, वो एक कोई प्राइस करेक्शन नहीं है, बल्कि अब जो जो अप ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, अनटिल एंड अनलेस 0.618 लेवल इज़ नॉट ब्रोकन। तो अगर आप देखें हमें आज की एग्जैक्टली 0.618 को टच करके ये ऊपर की तरफ रैली इसने दिखाया हुआ है आज के दिन। सो दिस इज़ आवर थर्ड कन्फर्मेशन, आई एम सॉरी फोर्थ कन्फर्मेशन। ओके, एक हमारा रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट बन चुका है, एक हमारा वॉल्यूम्स हो गया, तीसरा जो है हमारा ईएमए का लाइन, एंड चौथा जो है हमारा विच हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट लेवल्स, जो है हमारा फिबोनाची लेवल्स। And if I was actually waiting for a breakout at support level, because whenever the price comes at support, I do not jump in, like no, just because it has came to the support, I make sure that कि कोई ये breakouts और levels मुझे मिल जाए यहाँ पे, and then I get into the stock. So यहाँ पे I was continuously waiting कि ये कब it gives me a support, it gives me a breakout. So finally जब ये volume दिखा हुआ है यहाँ पे, जो वॉल्यूम के पहले ही एक्चुअली मैंने बाई कर लिया था। इफ़ यू सी दिस कैंडल्स, ओके, आई विल ड्रॉ इट अगेन फॉर यू। ओके, सो दिस द कैंडल्स, जब ये दो रेड कैंडल बनाई और जो रेड ग्रीन कैंडल बनाई है तो मैंने सोचा कि यार अब ये जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो आई एक्चुअली जम्प्ड इनटू द ट्रेड। सो यू कैन से दैट आई got into the price, and then I was waiting for the price to break out, and finally the price got in breakout and it started to move towards upside. This is how it works. और मेरा जो अगर आपको मैं बता दूँ कि what is my position at this point of time, this is my position if you can check. So I have taken a trade at 3,898. My stop loss is 3,850. It's a strong strict stop loss आई वुड से, बिकॉज नीचे की तरफ अब मुझे कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर जाता है तो ये और भी नीचे गिर सकता है। तो इट्स बेटर दैट इफ स्टॉक डजंट मूव इन माय फेवर, आई विल गेट आउट ऑफ द मार्केट इन अ स्मॉल स्टॉप लॉस। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो मैंने 4085 के आसपास मैंने अपना टारगेट लगाया हुआ है। सो लेट्स वेट एंड वॉच दैट हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। आई एम ऑलरेडी इन लाइक ऑलमोस्ट 1:2 ट्रेड, मेरा 1:2 मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, बट द ट्रेड इज़ फॉर 1:2 ऑलमोस्ट 5 1:4. So I'm just waiting for my last target to hit. So ये हो गया first trade, and if I check you for the second trade, Nifty IT, okay, LTI Mindtree, all right. So I have already booked the profit, okay, मैंने already profit book भी किया हुआ है इसमें, and then again आज मैंने फिर से entry लिया हुआ है इस particular stock में. Okay, so ये ट्रेड में एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट टाइम व्हेन आई टुक द ट्रेड दिस वाज माय एंट्री एंड दिस वाज माय एक्सिट। गिव मी 1 सेकंड। ठीक है, तो ये जो मेरे लेवल्स हैं यहाँ पे मैंने एंट्री ली हुई थी मेरी, एंड दिस वाज माय मैंने बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखा हुआ था, बिकॉज आई न्यू कि अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है ये तो अपसाइड पोटेंशियल है इसमें। अगर यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाता और नीचे की तरफ आ जाता है तो आई कैन सी मेजर लाइक मे बी प्राइस जो है वो 5100 तक भी एक्सपेक्टेड था इफ़ इट ब्रेक्स 5350 का लेवल्स। सो मैंने छोटा ही स्टॉप लॉस रखा हुआ था, एंड दिस वाज माय ओनली टारगेट। आई वाज नॉट वेटिंग फॉर अ ह्यूज टारगेट, बिकॉज हार्डली 2 या 3 दिन का ही मेरा पोजीशन था ये। सो सी मेरा 2 दिन में ही मेरा एक्चुअली पोजीशन एग्जीक्यूट हो चुका था उस टाइम पे। सो आई टुक माई ट्रेड मे बी ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे आई गेस, एंड देन ऑन फ्राइडे जब सारे IT सेक्टर्स पंप इन करने लगे तब मैंने अपना ट्रेड जो है वो क्लोज़ कर दिया था मेरे टारगेट के लेवल्स पर। हालांकि मेरे एग्जिट करने के बाद और भी ऊपर गया हुआ था स्टॉक, बट आई कैनॉट रिग्रेट एक्चुअली वंस माई टारगेट इज सेट, आई कैनॉट बी रिग्रेटिंग कि प्राइस इज गोइंग मोर अपसाइड नाउ, व्हाट डू आई डू। आई वाज अबाउट टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन अगेन, बट आई वाज जस्ट वेटिंग कि अगर ऊपर का 5600 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो आई विल गो फॉर अनदर लॉन्ग पोजीशन, एंड इफ़ इट डिडंट क्लोज, अगर क्लोज नहीं कर पाता है तो अगर ये नीचे की तरफ आ जाता है वापस 5450 5500 के आसपास, तो फिर वहाँ पे मैं लॉन्ग पोजीशन बना लूँगा अपना। तो दैट्स व्हाट हैपेंस। सो आई विल टेल यू कि मैंने और एक जो हमारा लॉन्ग पोजीशन है वो कहाँ बनाया हुआ है।
तो या आज अगर हम देखें तो मैंने बॉटम पे अपना लॉन्ग पोजीशन फिर से बना लिया हुआ है। तो फर्स्ट मेरा जो था 5350 के आसपास मेरा लॉन्ग पोजीशन बनाया हुआ था मैंने। आई टू कैन एग्जिट अराउंड 5600 के आसपास, ऑलमोस्ट नो 5% का प्रॉफिट आई मेड। नाउ अगेन टुडे आई मेड अ पोजीशन, ओके। यहाँ पे मैंने एंट्री लिया हुआ है, इफ़ यू कैन चेक, विच इज़ 4080 एंड 5400 इज़ माई स्टॉप लॉस लेवल। ऊपर की तरफ अगर हम देखें, इस बार मैंने टारगेट थोड़ा लंबा थोड़ा दूर का रखा हुआ है, बिकॉज आई सी प्राइस दो बार ऊपर जाके नीचे आ गया है। तो आई बिलीव नाउ दिस टाइम इफ द प्राइस गेट्स ब्रोकन, इट माइट aim for 5800 as well, which is the higher level. And also TC LNT Mindtree is going to announce their results on Wednesday, and I believe the results no will not be that bad. It will be good. Also अगर TCS का हम देखें फ्राइडे को, तो TCS रिजल्ट बेस के वजह से काफ़ी 6% 7% अप था। So I'm expecting that even LT Mindtree अगर not 6% 7%, but it can at least give us 3 to 4% gain in a single day. तो मैंने एक्चुअली बॉटम पे किया हुआ है। अब ऊपर की तरफ मैंने प्रॉफिट बुक किया हुआ है, नीचे की तरफ मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिली। आई एम लकी दैट प्राइस स्टार्टेड टू फॉल अगेन, एंड देन आई हैड टू गेट in the position at a discounted price. So let's see, I'm just waiting till Wednesday how the price will react. If it come down, then I'm gonna exit somewhere around 5400, because if you see the levels, तो मैं आपको लेवल्स बता दूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये काफ़ी एक रेजिस्टेंस लेवल था। तो अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए, बट इफ़ इट डिडेंट सस्टेन above these levels and started to breach again, then I'll have to get out of the position, as simple as that. So yeah, that is all for today, okay. So these two trades we have taken for today, one into escorts and another one is into LTI Mindtree, which is purely result based, and escorts जो है हमारा वो technical based था. So the probability is for almost 80% in escorts, and there are 5 different confirmations which is indicating that we should take a long position with escorts. And LTI Mindtree, जैसे मैंने कहा, it's going to be result based trade. So we are just waiting for Wednesday and Thursday, and let's see how exactly how everything works out. So we have managed our risk at downside, and we have managed somehow by trailing our stop losses by reaching towards our target as well. So this is how it works, okay. If you are if you are a trader and if you have decent knowledge about stock market and maybe about technical analysis, you will be able to understand how exactly one should take a trade, they should manage their trades, risk reward जो है हम आप कैसे उसको evaluate करें and everything. Still, if you need more information, if you want to learn more about this, you can get back to me. Thank you. Right, so guys, I'm just gonna show you the trades for escorts and LTI Mindtree, which I took few days back. So here is my PNL report. I'll get it down into future and then options, realize PNL. It's gonna be from first. Okay, so basically I have a lot of trades in my account. As you can see, I have faced a loss as well in Adani Enterprises a few days back. So coming down to escorts, okay, if you can see, there are multiple trades that I have taken. You can see the breakdown as well. So yeah, this is how I have managed trades for escorts. Okay, I have made a profit somewhere around 55,000 in escorts, and coming down to when I see Prudential Life, I made pretty good out of it. And coming back to LTI Mindtree, I made somewhere about, you can see, 1,30,000 is the overall profit that I've made in LTI Mindtree. And there are multiple trades that I've taken, as you can see. I've been buying and selling, taking almost 2% returns in every single trade. So yeah, this is how it works. Okay, so LTI Mindtree overall it's 1,35,000, and in escorts I guess it's gonna be around 55 60,000, something like that. Yeah, so yeah, that's all, I guess. This is the profit for the month of July. Let's see how it goes in the next month, August. Hope everyone is doing great in their trading journey, and
You can contact me in case of learning more about technical analysis and how to evaluate your strategies in different market conditions. So you can ping me down, you can comment down below, and yes, you can like the video, you can share the video, you can subscribe to my channel to get to be more attentive to all the videos that I regularly put on my channel. So yeah, that's it, and thank you.